Hello and welcome to Drive It Repeat. My name is Uday. I am going to take you to the 37th Hunar Haat Expo here in Hyderabad. Artisans, craftsmen and culinary experts from all over India come to this expo and we have a lot to see. Let's go. The benefit of driving a bike. You can just cruise through the traffic. We have now arrived. I am here and I am super early and the stalls are being set up right now. Let me show you around. I have come here pretty early, but I am super lucky to have been able to meet a few people and see how they were preparing their stalls, how they were setting up their food stalls, how they are setting up their craft stalls. I'm going to show all of them to you. I'm going to give you a detailed walkthrough over all of them, and we'll also speak to some of the special chefs here at these stalls. So that's the front side of the stalls, and on the back, this is where the cooking goes on. राम राम शाह, आपका राजस्थानी फूड में आपका स्वागत है। ये चूरमा लड्डू है, राजस्थानी लड्डू। बहुत बढ़िया। MP का पकवान फ्रॉम इंदौर। ये मैंगो कुल्फी केसर पिस्ता है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ चॉकलेट कुल्फी, बटर स्कॉच कुल्फी और ड्राई फ्रूट अंजीर कुल्फी, ये सारी अभी रेडी होने वाली है। इसके अलावा कुल्फी फालूदा, रबड़ी फालूदा, चॉकलेट फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, मैंगो फालूदा, सभी तरह का कुल्फी फालूदा रबड़ी के साथ में यहाँ पर अवेलेबल रहेगा था। Guys, I just met Ranjan Raj from Bihar, and he is the one who actually made litti chokha and mawe ka anarsa for our honorable Prime Minister. So we are at his stall now. नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन राज पटना बिहार का निवासी हूँ और मैं पहली बार हैदराबाद शहर आया हूँ और मैं यहाँ के लोगों के लिए बिहार का व्यंजन जैसे लिट्टी चोखा, बिहार का जो ट्रेडिशनल फूड है लिट्टी चोखा वो, और स्वीट डिश में मावे का अनरसा, चंद्रकला, कचरी पकौड़ी, हींग की कचौड़ी, सत्तू की कचौड़ी और भी कई तरह के बिहार के लाजवाब व्यंजन हैं। तो मैं आपके शहर हैदराबाद में पहली बार लेके आया हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग एक बार हुनर हाट मेले में आएँ और बिहारी व्यंजन का स्वाद चखें। ये सर हमारा लखनऊ का चाइनीज़ फास्ट फूड है। इसमें चाउमीन मिलेगी, आपको फ्राइड राइस मिलेगा, चिली पटैटोस, फिंगर चिप्स, स्प्रिंग रोल, मोमोज, बहुत सारे आइटम मिलेंगे सर। आप ट्राई करिए, अच्छा लगेगा। The chole bhature and rajma chawal of Bulandshahr. There is going to be everything that you can explore here. Culture, crafts, a lot of food, a lot of cuisines are being presented here. This whole bullock cart is made of styrofoam. Let me introduce you to the Kashmiri red rice. Look at this. एक्चुअली ये जो रेड राइस है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स खास कर तो ये आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल भी घटाता है, अस्थमा पेशेंट को भी ये लग सकता है, ये बोन्स के हेल्थ को भी बेहतर करता है।
So I just learned something. You can also eat the Kashmiri red rice as it is. And I literally mean you can eat it raw. I did try a few grains. I'm trying a few more. So these taste sweet and not very sweet, kind of a sweet aftertaste, and it's really nice. And let me thank these wonderful men over here who introduced me to the Kashmiri red rice, and they've been super friendly, and they give me a lot of information related to the Kashmiri red rice. In case you are missing out on this exhibition, you can call them on this number. You can order from them. As you can see, this entire lane is filled with stalls of textiles. You have clothes from all across the country. ये भागलपुरी सिल्क है, भागलपुरी सिल्क है, 1 नंबर सिल्क है। दिन भर में 1 मीटर ही कपड़ा बिना जाता है सर। नमस्कार सर, मैं सुरेश कुमार हूँ। मैं दिल्ली नॉर्थ वेस्ट से हूँ। MSME में हम लोग रजिस्टर्ड हैं और ये हमारा यूनिक आइटम है जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स हैं जो हम लोग बेचते हैं।
Well, I have checked out all the stalls. I've enjoyed looking at those crafts. I've had a lot of fun. I'm done exploring the Hunar Haat 2022 here in Hyderabad, Telangana. There is also going to be a circus here in some time. Along with the circus, there will also be some cultural programs, and this is where all of them will happen. I'm not going to be staying for that activity because I've come here very early when these things were being set up. So it is time for me now to go back. With that, I'll be ending this video. I hope you liked this one. If you did, hit that like button. Don't forget to subscribe, and I'll see you in another video. Until then, take care and have fun and stay safe. Bye bye.